Hello, good morning students. Yesterday we discussed question number 3, part first in exercise 2.4. Today we discuss part second. What is the question? Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. X minus 1 is a factor. Already tell x minus 1 is a factor of this polynomial. So it means x minus 1 is equal to 0. Value of x is 1. Find the value of k. What say it's a factor. So that's why p1 is equal to 0. It means value put here on the place of x, it means 0. Now put the value on 1 on entire polynomial. So 2 1 square plus k into 1 plus root 2 is equal to 0. Now solve it. 2 plus k plus root 2 is equal to 0. Now transferring the values. So minus 2 minus root 2. Minus 2 minus root 2. Now take the minus common here. So minus common, so 2 plus root 2 is your answer. Understand this question? Okay. Now part C of question number 3. After that we discuss long division method of polynomials. It's a very important topic for you because long division method used in 10th class. Now third part of question number 3 is px. Everyone start in your rough notebook. Kx square minus 2x plus 1. This is your questions. Find the value of k. Find the value of k. Similarly, put 1 here because p1 is equal to 0. Put the value of x on the place 1 on the place of 1. Now plus 1 is equal to 0. Solve k minus root 2 plus 1. Transferring the values, then we get minus 1 plus root 2. We can write this root 2 minus 1. K value is root 2 minus 1. How many students get this answer? Raise your hands. Okay. Now part 4, question number 3, part 4. Px, solve in your rough notebook first. Kx square minus 3x plus k. Find the value of k. X minus 1 already a factor of this polynomial, so p1 is equal to 0. Put the value of 1. Solve k 3 plus k plus k is equal to 2k minus 3 is equal to 0. Now transfer the values. 3 k is equal to 3 upon 2. Value of k is 3 upon 2. Now we start question number 4, factorize. Factorize of polynomial. Question number 4, factorize. 12x square minus 7x plus 1. 12x square minus 7x plus 1. So factorize this polynomial.
You already solved this polynomials problem in 8th class. Same problem repeated here. So please check it once again. First we multiply first and last value. So answer is 12x square. Now this value 7x minus 7x. So factorize this value in this form. If we adding and subtract, then minus 7x we can get. So 12x square minus 3x minus 4x plus 1. Now take common here in this value, in both the values, here in both the values. Here 3x common, so 4x minus 1. Here 1 minus 1, 4x minus 1. Again 4x minus 1 and 4x minus 1. Take the common, so factorize is 4x minus 1 and 3x minus 1. Now part second, question number 4. Do yourself in rough notebook first, then check your answer. 2x square plus 7x plus 3. 2x square plus 7x plus 3. Everyone solve in your rough notebook. Do fastly in your rough notebook. Two x square plus 7x plus 3. Factorize. Already studied in 8th class, it's not new topic for you. I think enough time you have. 1, 2, 3, 4, 5 students. 6, 7, 8. Okay, now check your answer. First we multiplying both the values 2 and 3, then we get 6x square. So this factorize this value in this way. If we adding, then we get adding and subtract, then we get plus 7x, and multiplying both the values, then we get 6x square. So how can we distribute 3 here plus 6x plus x? So check it here, 6 plus x, 7x, and multiplying both the values, then we get 6x square. Now take the common in both. Here 2x common, so x plus 3, here 1, x plus 3. Again x plus 3 is common, so x plus 3, 2x plus 1. How many students get this answer? Please raise your hands. Divya, Diksha Lamba, Gargi Seni. What happened, beta? Okay, now part third. Start. If everybody have book, so please start. If anybody not have book, so please check the question on the board. 6x square plus 5x minus 6. 6x square plus 5x minus 6. 6x square plus 5x minus 6. Some student already done this question. Okay, many student done. Check it. Check your answer right now. Multiplying, so minus 36x square we find out. So minus 9x minus 4x. Distribute this value in 9x minus 4x. 9x. Now take common here. 3x common, so 2x plus 3. Here minus 2 common, so 2x plus 3. So 2x plus 3 again common, so 3x minus 2. How many get this answer?
almost everyone complete this question. Very good, because this is important for you, because if we done the question number 5 after that, so first we study long division method. Long division method using in your 10th class is a very important topic. So question number 4 part 4 you can do yourself in your home. Now we discuss very important topic for 10th class, long division method of polynomials. Long division method of polynomials. Please concentrate on the board. Long division method of polynomial. Everyone do question number 4 part 4. It's your homework. Now concentrate on the board, please. Long division method. We take an example and we solve the, how can solve the question. Now take example, x cube divided x cube minus 2x square minus 5x plus 6 by x minus 1. Concentrate on the board, every students, please. Divided this polynomial by this. Everyone know how we divide of real numbers and natural numbers and whole numbers. Similarly, use divide sign here. Write this polynomial in this as a dividend. Divide this polynomial as a dividend. Now x minus 1 as a divisor. Okay, first step this. Now concentrate in this polynomial. Please concentrate on this polynomial. Highest power x cube. Highest power is x cube. Again I tell, please check first which variable have highest power. Highest power is x cube. So this one is x, only x. How can we make this value x cube? So we multiplying this value x square, then we get x cube. So we divide by x square. Again tell, ये आपका डिवाइडेंड है, ये आपका डिविजर है. आपको डिवाइड करना है. पहले आपको ये चेक करना होगा कि इन पूरे पोलिनोमियल में कौन सी डिग्री हायर है. तो यहाँ पे क्या है, x क्यूब ज्यादा हायर है. तो हमें इसको, इस जो हमें जो डिविजर है इसको x क्यूब बनाना है. x क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे अकेला मेरे पास सिर्फ x है. तो x को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो x क्यूब बन जाएगा. So multiplying x square, this x cube. Some student mistake here, they only write x cube. No. Now x square multiplying with value minus 1. So minus x square. Again repeat. आपको इस x square को इस x से भी multiply करना पड़ेगा और इस 1 से भी करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे 1 more term होती तो आप उसको भी multiply करके यहाँ पे लिखते. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 term है तो 2 टाइम ही लिखेंगे. अब हम क्या करते हैं, डिवाइड के अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं. हम डिवाइड के अंदर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. तो सिमिलरली सब्ट्रैक्ट, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस हो गया. यहाँ पे दोनों सेम थी. हियर माइनस माइनस, और अगर एक और माइनस लेता हूं तो कितने हो गए, ये माइनस, ये भी माइनस, और अगर इसका माइनस करता तो ये वैल्यू किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है. जब माइनस में से प्लस माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर. ये चीज समझना. आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, तो प्लीज ये क्या है, माइनस 2x स्क्वायर. ओके, हम क्या करते हैं, डिवाइड में माइनस करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, आ गया. अब ये जो वैल्यू किसकी है, माइनस की है ना. अब अगर इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस. देखो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और वो 3x स्क्वायर लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक होती है. आपको अगर वहां नहीं समझ में आता तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो. अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप माइनस लिखोगे
तो ये दोनों माइनस मिलकर किसका साइन हो गया, प्लस का, और ये माइनस का और ये प्लस का है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या आप लोगों ने इंटीजर चैप्टर पढ़ा है 6th क्लास के अंदर, जब एक वैल्यू माइनस की दूसरी वैल्यू प्लस की है तो उनका ऑपरेशन क्या होगा, माइनस का होगा, और जो साइन है वो बड़ी वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। हाँ, नाउ remainder is minus x square, so again we take all the values here, remaining values, ये दोनों हमने सोल्व कर ली, ये दोनों बची है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, नाउ दिस इज ए पॉलिनोमियल अगेन। नाउ चेक विच वन हैव हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, इसको क्या बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमें किससे मल्टीप्लाई